हम इनर प्रोडक्ट पर अपनी बात कर रहे थे और इनर प्रोडक्ट के बारे में जो यूक्लिडियन स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था इनर प्रोडक्ट का वो मैंने आपको बताया। इसी तरह जब हम स्पेसेस की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी स्पेसेस। स्पेस से मतलब यहाँ पे वेक्टर स्पेस, देयर आर सो मेनी वेक्टर स्पेसेस, यानी कि वो वेक्टर स्पेसेस जिनके एलिमेंट्स इटसेल्फ पॉइंट्स भी होते हैं, जिनके एलिमेंट्स इटसेल्फ सीक्वेंस भी होते हैं, उनके एलिमेंट्स इटसेल्फ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शनल एनालिसिस में हमने स्पेसेस के बारे में डिस्कशन की और मैंने आपको बताया था कि कोई सी ए बी का स्पेस होता है, स्पेस ऑफ ऑल कंटेन्स फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। सम फंक्शंस आर डिफाइंड ऑन सीक्वेंस स्पेस, सम फंक्शंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस पे डिफाइंड होते हैं। तो स्पेसेस बहुत। अब अगर हम इनर प्रोडक्ट को जनरल स्पेसेस की बिहाफ पे डिफाइन करें तो इनर प्रोडक्ट क्या चीज है? अगर आप इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ एक स्पेस है। इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ एक स्पेस है। तो अगर हम इस स्पेस को डिफाइन करें, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस an inner product space is a vector space with inner product defined on each of its vector, each of its pair vectors। इवन सिंगल वेक्टर का भी इनर प्रोडक्ट निकालता है, वो हम देख चुके हैं कि, और पेयर वेक्टर से मुराद कम से कम हमें दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ईच ऑफ इट्स वेक्टर से मुराद दोनों के दोनों वेक्टर सेम भी हो सकते हैं, एंड दे बोथ आर डिफरेंट वेक्टर्स। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है with inner product defined on each of its pair vectors। अब एक वेक्टर स्पेस में अगर इनफाइनाइटली मेनी मेनी एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए कोई एक टेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम ये क्लेम कर सकें कि एक वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है। वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगा? वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस उस वक्त बनेगा जब उसके तमाम के वेक्टर्स को यूज करके उस पूरे के पूरे स्पेस में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया जाए। अगर ये पॉसिबल है तो फिर हम उस वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये काम करना मुश्किल होता है कि जिसमें हमें एक इनफाइनाइटली मेनी मेनी एलिमेंट्स हो या इवन फाइनाइट एलिमेंट का भी कोई स्पेस हो और उसमें हम इनर प्रोडक्ट हर दो एलिमेंट का अलग अलग चेक नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एक्सियम्स की तरफ, वो एक्सियम्स डिफाइंड, ऐसे एक्सियम्स डिफाइंड हैं जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में आपको बताते हैं। लेट an inner product defined on X is a mapping of X cross X into scalar field K of X।
that is with every pair of vectors x and y, there is associated a scalar which belongs to field. Field could be real, field could be complex. Then X is called inner product space if the following axioms are satisfied. What are the following axioms? The first one is x plus y z is equal to x comma z plus y comma z. This is the first one axiom. The second one axiom is alpha x comma y is equal to alpha times x comma y. Third one axiom, xy is equal to yx. And the fourth and last axiom is x cross x is always a non-negative number, and if it is 0, which implies if and only if x is equal to 0. So these are the four different axioms which we have to satisfy for a space to be an inner product space. इसी स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए हमें ये बात साबित करनी होती है कि ये चारों के चारों एक्सियम्स उसमें फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर चारों के चारों एक्सियम्स फुलफिल हो जाए किसी तरह, तो वी कैन क्लेम दैट स्पेस is an inner product space. We can claim that space is an inner product space. So it is necessary कि हम all these four axioms को satisfy करें. Now we will see some examples. Also we will see some different properties which inner product follow. In that properties, first of all, इन्हीं एक्सियम्स को रिलेट करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं to prove that Rn is an inner product space with inner product x y, this is equal to x1 y1 plus x2 y2
प्लस अप टू एक्स एन वाई एन। सो इस कंडीशन में जिसमें इनर प्रोडक्ट सारा डिफाइंड है, ये आर एन का इनर प्रोडक्ट है और आर एन एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हाउ कुड वी चेक दिस यूजिंग और बाय प्रूविंग दीज ऑल फोर प्रॉपर्टीज? हम ये देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट आर एन एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। So how can we prove that this Rn is an inner product space? For all those properties we have to satisfy. First of all, we will satisfy this first property, and so take a proof, and this first property states that x plus y comma z is equal to xz plus yz. So first of all we take this inner product. इस पे आप इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं जो बाय डिफाइनिंग कंडीशन है। इनर प्रोडक्ट आर एन में कैसे डिफाइंड है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, जो राइट हैंड साइड पे वेक्टर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद प्लस सेकंड कंपोनेंट इनटू सेकंड कंपोनेंट, इवन कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होने के बाद nth कंपोनेंट इनटू nth कंपोनेंट। अब इस इनर प्रोडक्ट में x प्लस वाई ये फर्स्ट वेक्टर है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, z ये सेकंड वेक्टर है जो कि सेकंड वेक्टर है। तो इनके कंपोनेंट्स को अगर हम कंपोनेंट वाइज इनर प्रोडक्ट निकालें तो दिस इज x1 प्लस वाई वन इंटू z1। ये x1 प्लस वाई वन इस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट, while this z1 इस राइट हैंड साइड वाले वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x2 प्लस y2 इंटू z2 डॉट प्लस xn plus yn into zn. Now distributive property अगर हम अप्लाई करेंगे, so this is x1 z1 plus y1 z1 first factor plus x2 z2 y2 z2 and up to xn zn plus yn zn. So this is after multiplication. Now अब हम क्या करें, इसे हम तमाम एक्स जी कॉम्पोनेंट को एक तरफ सेपरेट कर लें और तमाम वाई जी कॉम्पोनेंट को एक तरफ सेपरेट कर लें। सो दिस इज x1 z1 प्लस x2 z2 प्लस अप टू xn zn प्लस y1 z1 up to yn zn. Now this first bracket represents the inner product in between x and z, while the second bracket with plus sign represents the inner product y comma z. So this is xz plus yz. So in general we will write this that property is xz plus yz. So this is the first property which we have to prove. Second property, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अल्फा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स कॉमा वाई। इन अ सिमिलर मैनर सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें और लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा एक्स कॉमा वाई ये इसको रिप्रेजेंट करें। इस पे आप इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है आपको कि एक लेफ्ट वेक्टर है इनर प्रोडक्ट का और एक राइट वेक्टर, इन दोनों के कंपोनेंट का आपने क्या करना है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन करना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है अल्फा एक्स वन आए फर्स्ट कंपोनेंट, अच्छा राइट साइड का वाई वन हो जाए प्लस सेकंड कंपोनेंट अल्फा एक्स टू वाई टू। चूंकि अल्फा जस्ट एक कांस्टेंट है तो अल्फा के साथ हम इंडेक्सिंग यूज नहीं करते, अल्फा जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिक्स कांस्टेंट है। सो
plus dot 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 up to alpha xn yn. Now अल्फा इसमें से कॉमन आ रहा है, तो अल्फा आप जब कॉमन लेंगे, so this is x1 y1 plus x2 y2 and up to xn yn. So after taking alpha common, we got alpha times, this is the definition of the inner product. ये inner product की definition define किया है, ये x comma y का inner product. So we have proved this left hand side alpha x comma y is equal to alpha times x comma y. So this is the inner product second property. While the third property is what? Third property states that x y is equal to y x. एक चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट हम एडिशन करना चाह रहे हैं, अब तक हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसमें बताया था कि ये सिमेट्री, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज उस वक्त तक पॉसिबल हैं जब आपके पास वेक्टर स्पेस एक रियल वेक्टर स्पेस, लेकिन जनरल आप वेक्टर स्पेस की बात करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी हो, तो फिर हमें इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को जस्ट एज इट इज सिमेट्रिक नहीं लेना पड़ता, बल्कि इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्जुगेट सिमेट्री के तौर पर यूज करते हैं. कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब ये होता है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट वाई एक्स के कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट के इक्वल. कॉन्जुगेट लेना आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये जानते हैं कि कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं. अगर x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका इमेजनरी पार्ट अगर हम अपोजिट करते हैं इमेजनरी पार्ट के साइन को, तो x माइनस आयोटा वाई उसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कहना. सो सिमिलर वो जो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, वो यही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ. सो जनरल इनर प्रोडक्ट स्पेस के एक्सियम्स में ये चीज एडिशन है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ये बता दें कि इनर प्रोडक्ट एक रियल वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड है, तो वहां पे कॉन्जुगेट सिमेट्री लेने की नीड नहीं होती, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ वही सेम रियल नंबर होता है. इसलिए इन जनरल जहां पे बार ना लगा हुआ हो, उसका मतलब ये होता है कि रियल वेक्टर स्पेस की बात होती है. जहां विद बार हो, इसका मतलब वहां जनरल वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स भी फील्ड हो सकती है, उसमें रियल फील्ड भी हो सकता है. तो हम ये भी बात कर रहे थे. The third property is xy is equal to yx का conjugate. Now again we take left hand side xy. So this is x1 y1 plus x2 y2 plus dot xn yn. So by definition, this left hand side, this is equal to x1 y1 x2 y2 plus xn y. Now हम ये जानते हैं कि we can write this y1 x1 plus y2 x2 plus up to yn xn. अच्छा, चूंकि ये Rn है, Rn एक यूक्लिडियन स्पेस है, और इस यूक्लिडियन स्पेस में जो स्केलर फील्ड है वो इटसेल्फ के इटसेल्फ R है. सो यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन अगर किसी आप रियल नंबर का बार अगर लें कॉन्जुगेट, तो वो इटसेल्फ रियल नंबर ही आता है. conjugate of real number itself that number. So इसके ऊपर ये चूंकि ओवरऑल रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, इस पर अगर हम एक कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट बार, so we can write this whole term into y comma x bar. So in general this is x comma y is equal to conjugate of y comma x. So generally ये बात फिर प्रूव हो जाएगी और हम ये बात शो कर सकते हैं कि x y is equal to y comma x. Now fourth one property is what? Fourth property is x comma x is a non-negative number.
x कॉमा इस नॉन नेगेटिव नंबर हम कैसे कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और इसमें x और x का इनर प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन निकालते हैं, x1 प्लस x2 एंड अप टू xn. सो ईच नंबर का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर. सो चूंकि हर नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग मीन ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर इनमें से कोई एक क्वांटिटी भी जीरो हुआ, एक वेक्टर भी जीरो हुआ x या y, तो फिर वो नॉन नेगेटिव की कंडीशन में आ जाएगा. सो ड्यू टू स्क्वायरिंग वी से दैट दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. बट इफ x इज अ जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या है, ईच कंपोनेंट इज इट्स जीरो. सो अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर होता है x कॉमा जीरो या फिर जीरो कॉमा एक्स, x कॉमा जीरो, चूंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, x अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो कॉमा जीरो होगा इटसेल्फ. जीरो कॉमा जीरो की अगर आप बात करें तो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स इसमें क्या होंगे, जीरो. और तमाम के तमाम जब जीरो कंपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एट दी एंड रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. तो फोर्थ वन प्रॉपर्टी का जो पार्ट बी है, दिस इज पार्ट ए एंड पार्ट बी इज व्हाट, x is equal to zero if and only if x is equal to zero. So इस तरह आप इनर प्रोडक्ट के जीरो होने को शो कर सकते हैं. सो ये आपके पास जनरली ये वो एक्सियम्स हैं जिसकी मदद से आप शो करते हैं कि कोई स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है. इसी तरह सिमिलरली Cn यूनिटरी स्पेस is an inner product space where inner product defined by x comma y x1 y1 bar plus x2 y2 bar bar mean conjugate and up to xn yn bar. So this is the inner product defined on unitary space C, space of all complex numbers. So at the end हम इस इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करते हुए अगर ये सारी फोर की फोर प्रॉपर्टीज यहाँ सेटिस्फाई करवा दें तो एट द एंड हम ये क्लेम कर देंगे Cn is also an inner product space. सिर्फ ये दो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं, जनरली बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में आते हैं और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. those examples follow examples of inner product space. उन एग्जाम्पल्स में आपको कौन कौन सी और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, आर एन और सी एन को तो हमने देखा है. अदर एग्जाम्पल्स में आपके पास स्पेस L2 of AB where AB is included. In that L2 space, the norm is defined. Norm of x is integral from a to b x of t का square dt to the power half. And the inner product x y is equal to inner product a to b x of t
y of t dt, x of t y of t dt. So this is the inner product defined on this L2 space. जब कभी आपको कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करने के लिए देंगे तो बेसिकली उसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके देंगे, हाउ टू फाइंड द इनर प्रोडक्ट और हाउ टू डिफाइन दैट द इनर प्रोडक्ट इन दैट स्पेस. इन अ सिमिलर मैनर जब हम सीक्वेंस स्पेस की बात करते हैं, सीक्वेंस स्पेस L2. So in that L2 space, the inner product is defined by x comma y, which is equal to summation xi eta I conjugate, where I runs from 1 to infinity. This is the inner product which is defined in L2 space, where x is actually the tuples of xi1, xi2, xi3 and onward. They are infinite space, so each number has infinite number of elements, and y is eta 1, eta 2 and up to infinitely, eta till infinity. So using this concept, actually this is a similar concept where we have to use we have used in unitary space C. Same concept wahi hai. So these are all the inner product space, their inner product defined by this. One of the another important inner product space is CAB, space CAB. CAB, space of all continuous function defined on the interval A, B. This space CAB इस स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, so let f g are the two continuous functions and that is belongs to CAB. CAB means this is continuous on interval AB. So the inner product of f and g could be defined as integral from A to B f of x g of x dx. So in that case, we can define the inner product of space CAB. So there are lots of general inner product spaces जिनके inner product define होते हैं, और हम इन inner product की definition को use करके ये prove कर सकते हैं they are all inner product space by proving all their 4 axioms.